Assalamu alaikum students. Okay students, today our topic in social studies subject of class 3 is clean and healthy. Okay, today we will do the oral drilling of question answer of this lesson 3, keeping clean. But before starting the question answer, first we will do the short summary of this lesson. Okay, हाउ डू वी कीप और सेल्फ क्लीन, हम अपने आप को क्यों साफ रखते हैं? बिकॉज वी थ्रू दिस वेज वी कैन कीप और सेल्फ हेल्दी. ठीक है, हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं. यहाँ पे जब हम सेहतमंद रहेंगे तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी महफूज रहेंगे. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वेज तरीक़े दी गई हैं जिनकी मदद से हम डेली अपने आप को साफ रख सकते हैं. नंबर फर्स्ट, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. सुबह के वक्त और रात को ब्रश करना चाहिए दांतों को. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा दांतों को साफ़ करना चाहिए. एक तो सुबह जब आप उठ जाते हैं उस टाइम ब्रश किया करें, और एक रात को सोने से पहले दांतों को ब्रश किया करें ताकि आप लोगों ने दिन को जो खाया पिया हो, जो पार्टिकल ज़रात जो है दांतों में फंसा हुआ हो, तो वो भी निकल जाए. नेक्स्ट इज़ हैव अ बाथ और अ शावर एवरी डे. रोज़ाना आप लोगों को बाथ लेना चाहिए. ठीक है, क्योंकि गर्मियों का दिन है तो बॉडी से जो पसीना है, स्वेटिंग है, वो ज़्यादा जाता है. तो आप लोग जब अपने आप को साफ़ रखेंगे, बाथ लेंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो फ्रेश रहेगी और जर्म से साफ़ रहेगी. ओके, कीप योर नोज़ क्लीन, यूज़ योर हैंकरचीफ और अ टिशू. नोज़ साफ़ रखा करें और इसके लिए या तो रुमाल, हैंकरचीफ या कोई टिशू जो है मस्ट इस्तेमाल किया करें. ठीक है, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो अपने आस्तीन वगैरह से नोज़ को साफ़ करते हैं या दामन से साफ़ करते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है. ठीक है ना, तो अपने आप को थोड़े अच्छे बच्चे बना लें. ओके, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग. कोई भी चीज़ खाने से पहले, खाना खाने से पहले, खाने के बाद, वॉशरूम यूज़ करने के बाद अपने हाथों को मस्ट जो है वो सोप से वॉश करनी चाहिए. ठीक है. ओके, वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट. कट योर नेल्स रेगुलरली एंड कीप देम क्लीन. और हफ्ते में, वीक में 1 टाइम ज़रूर अपने नेल्स को काट लिया करें ताकि उसमें जर्म्स ना रहें. ओके, कॉम्ब योर हेयर. अपने बालों को कॉम्ब भी किया करें. ठीक है, ताकि आप लोग नीट एंड क्लीन रहें. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अपने ड्रेस का ख्याल रखा करें, कपड़ों का ख्याल रखा करें, सफाई का, उसको बिला वजह गंदा ना किया करें. ठीक है. Now let's move toward the oral drilling of question answer of lesson 3. Right? Okay, question number 1. How can we keep ourselves clean? How can we keep ourselves clean? Answer is, we can keep ourselves clean. Number 1, by taking bath daily. Number 2, by brushing teeth. Number 3, by trimming nails. Number 4, by washing hands. ठीक है, वैसे तो ज़्यादा है, यहाँ पे हमने सिर्फ 4 पॉइंट्स दी है. How can we keep ourselves clean? हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं? Answer is, repeat after with me. We can keep ourselves clean by taking bath daily, by brushing teeth, by trimming nails, by washing hands. We can keep ourselves clean. Number 1, by taking bath daily.
by taking bath daily, by taking bath daily. Number 2, by brushing teeth, by brushing teeth. Number 3, by trimming nails, by trimming nails. Number 4, by washing hands, by washing hands. Question number 2, what clothes do you wear in winter? What clothes do you wear in winter? विंटर की सीज़न में, विंटर के मौसम में आप कौन से कपड़े पहनते हैं? सर्दियों के मौसम में आप कौन से कपड़े पहनते हैं? We wear warm clothes in winter. Warm mean garam. Warm mean garam. We wear warm clothes in winter. We wear warm clothes in winter. ठीक है, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं. We wear warm clothes in winter. We wear warm clothes in winter. Okay, question number 3. What clothes do you wear in summer? What clothes do you wear in summer? गर्मियों के मौसम में आप किस किस्म के कपड़े पहनते हैं? We wear light clothes in summer. We wear light clothes in summer. Light mean हल्के, जो हल्के पुल्के होते हैं. ठीक है, हल्के कपड़े. We wear light clothes in summer. We wear light clothes in summer. Now repeat it one time again. How can we keep ourselves clean? We can keep ourselves clean. Number 1, by taking bath daily. Number 2, by brushing teeth, by trimming nails. Number 4, by washing hands. Okay, question number 2. What clothes do you wear in winter? Answer. We wear warm clothes in winter. We wear warm clothes in winter. Question number 3. What clothes do you wear in summer? What clothes do you wear in summer? We wear light clothes in summer. We wear light clothes in summer. Note on the homework, students, learn question answer of lesson 3. Learn question answer of lesson 3 and also do reading of lesson 3 on book. And also do reading of lesson 3 on book. Thank you.